students, how are you? I hope you all are doing great today. मैं आपकी टीचर मिस रेनू राठी और स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जिससे बढ़ेगी हमारी नॉलेज। हम पढ़ेंगे देश दुनिया के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के बारे में और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर साउंड्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के साउंड्स के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Do you know how animals call? Fill in the blanks in the song with the call of the animals. You may use the help box. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि क्या आपको पता है कि एनिमल्स एक दूसरे को कैसे कॉल करते हैं? आपको बच्चों यहाँ पे ब्लैंक्स पे जो है इस सॉन्ग को जो है आपको सुनना है और इसके हेल्प बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे आपको बताना है। Now sing the song. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm we had some cows, E-I-E-I-O, with a dash dash here and a dash dash there, here a dash, there a dash, everywhere a dash dash. तो बच्चों क्या आएगा? हमें बोला गया बच्चों कि ओल्ड मैकडोनल्ड में एक फार्म था, वहां पे E-I-E-I-O करते थे और वहां पे जो है कुछ काउस होती थी। तो वो काउस क्या करती थी बच्चों? वेरी गुड स्टूडेंट्स, विद अ मू मू हेयर एंड अ मू मू हेयर, here a moo, there a moo moo, everywhere a moo moo. Second is old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had some sheep. कि बच्चों इस बार जो है old MacDonald में जो farm था वहां पे क्या थी बच्चों? sheep थी। With a very good students, ba ba here and a ba ba there. Here a ba, there a ba ba, everywhere a ba ba. Next is students, old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had some horses. इस बार क्या है बच्चों? इस बार हमारे उस farm में horses हैं। E-I-E-I-O with a very good students, neigh neigh here and a neigh neigh there. Here a neigh, there a neigh neigh, everywhere a neigh neigh. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had some ducks. इस बार क्या है बच्चों? इस बार उस फार्म पे वेरी गुड बच्चों डक्स हैं और डक्स की हमारी कैसी आवाज आती है बच्चों? वेरी गुड, E-I-E-I-O with the quack quack here and a quack quack there. Here a quack, there a quack quack, everywhere a quack quack. Tickle your brain. Look and count the number of animals given alongside. Write the number in the box. आपको बच्चों क्या करना है? यहाँ पे गॉड, डॉग, रैबिट और शिप है। आपको इन्हें बच्चों यहाँ पे काउंट करना है और इन बॉक्सेस में इनके नंबर्स को लिखना है। नो मोर स्टूडेंट्स। काउ क्या करती है बच्चों? काउ गिव्स अस मिल्क, वो हमें मिल्क देती है। हैन गिव्स अस एग, हैन हमें एग्स देती है। शिप गिव्स अस वूल, जो शिप है बच्चों वो हमें वूल देती है। So students, I hope you have understood the chapter pretty well. Now you just have to practice exercise questions and revise it again.